Hello friends, I am Parvinder from Ibsl India, and this video is based on the reading tips. In this video I have selected true, false and not given, and the questions are from 19 to 26 which we have to do, and you are the part of my class. And this is taken from the Cambridge 8 test 3, because there was a message and I am trying to do these true false which are based on nature of genius. First of all, you can check the questions, and these are the tips which are based on true, false and not given. And after this you will find the video which are based on the tips of multiple choice questions, that's MCQs. So here I will start. First of all, the underline, you can check the time please, so that we can complete. And almost there are 1 2 3 4 5 6 7 8 questions are there which we have to solve, right? And so just have an eye, and you are watching my YouTube channel, that's Parvinder Guru. Please like, comment and share my YouTube channel. Above all, subscribe my YouTube channel so that you can get the notifications. So let's start now. First of all, I will underline the time here, that is 19th century, right? Then he said fail to take the nature, so this is my noun here, to take into account the uniqueness of the person's upbringing. So upbringing, right, it may be related to the nurture also. And in the 20th, I am going to underline again, 19th century studies of genius lacked both objectivity and a proper scientific. So here I will go with the lack word, then objectivity and a proper scientific approach. So I have to check the both things here, that's why I have underlined. A true genius has general powers capable of excellence in any area. So this is, I have underlined. The skills of ordinary individuals are in essence the same. So here there is a matching with the skill of prodigies, right? I have underlined. The ease with which truly great ideas are accepted and taken for granted fails to lessen their significance. This one I have done in my previous video also. This word I have used here. The ease with which truly ideas are accepted. So I am going for the ideas here. So lesson I will underline, right? And next is giftedness and genius deserve proper scientific. So deserve, check the tenses also, which tenses they have used, so that all talent may be retained for the human. So here retained for the human race. And deserve also, geniuses often pay a high price. So high price to achieve greatness. So relation of this one, this is a human here and with the greatness. To be a genius is worth the high personal cost. So it's the high personal. If you want to be a genius, you have to give high personal cost. So I have underlined. Now let's start. These are the 2 pages. First of all, you can check please. From this the passage is taken, right? And we have to find our upbringing word here. And this is the one thing everybody knows, true, false, not given, they are always in order, right? So we will work in that manner. This is a page here. So here I will try to find this word, 19th century first of all. So you can check. Let's go for the scanning policy.
That first find the 19th century, wherever you will get, that is your answer here. This one I have got here, 19th century. So he is saying, and not a few studies of this one. Perhaps for us today, two of the most significant, I haven't got that frequency with and teaching by parents and tutors has this one, but greater. However, 1 minute, there is a linker here. The difficulty with the evidence produced by these studies. So difficulty is there or in collecting together with and connect dots and apparent similarities and exceptions. They are not what we would today call norm phase. In other words, when, for instance, information is collected, methods of upbringing, schooling, etc., to count information, this one exceptionally. So here upbringing is there from this line, when for, because from here to up to here and here also, right? So naturally what I will do first, then I will discuss the things. So answer goes to the true. He said lack both objectivity and a proper. So 19th century, he said these are the examples he have given. So punishment he has given also the example, right? This is page number 2. The cases members of this, it was only with the growth of this in the 20th that study could become more objective. So I got one word here, objective, right? So objective I have got here. So let's do this one also, and proper scientific, he said scientific basis also. So naturally from these lines, but these are related to the 20th century, we'll discuss later on. So it should be true. He said capable of excellence in any area. So here the definition is there, defined word is written. Then we can check here, right? Term we apply for those with whom, but I haven't got my answer here. Just check please. There is still much truth in Dr. Johnson observation. Mind of large general powers accidentally determined to some one direction, particular direction. So he is saying here in any area. So naturally it's a false here, because this is from this one 21, right? Next we may disagree with the general footnote becomes scientist, but there is no doubting the extent of which nurture. Again the ease with which accepted taken for granted fails to lessen. So he said along the this one, we appreciate, enjoy, marvel at the work are the which are similar to or much superior to our own, but their minds are not different from. So here you can check taken for fails to lessen their significance. What we appreciate, enjoy or marvel at the works of genius or achievements of prodigies are the manifestations of skills or abilities which are similar to be this. Appreciate, he said, lessen their so and skills of are in essence the same as the skill of prodigies, ordinary individuals. He said here I have got two things here which are similar to. So naturally I'll give true here. The lesson their significance also, common knowledge, because minimize, yes, I have got the line here, you can check please, supremacy of their achievements. So he said lesson their significance. So it may be because it will not achieve their, right? So naturally it is true. Then he said giftedness, I have to find the word here, and genius. Gifted, I have work here. Different brains, we accepted each human brain is uniquely different.
Purpose of history to make us even more different. Being human race. He said, time is running very fast, my dear. Check the time also. Don't genius and gifted uniquely human race. I haven't got. I'll give you. I'll drop it later on. Often pay a high price to achieve greatness. Then when we may envy their achievement, but we should also recognize the price they paid in terms of this and on their personal energies and time. Great courage to preserve their integrity or make their way to the top. Pay a high price. Naturally they pay, right? And then to be genius worth the to be a condition is there. Giftedness, I haven't got deserve. Proper scientific word is not there, you can check, so I'm giving it not given. Now one left here and I should write properly. To be a genius is worth the high. So he said genius and creativity do not real, so we may give precision by defining them and placing them in a context, but we should never delude ourselves into believing the gifted children the rest to be not there. Now let's discuss. It's not given, so 19th is true here, 20th again goes to true, and 21st is my false, right? 22nd is my true, 23rd is again true, 24th is not given, 25th no, and it's true, and 26th is not. So let's start it properly. But how I did, first of all I have underlined here 19th century studies of the nature of this fail to take into account the uniqueness of person's upbringing. I have read it, meaning I have got, but let me do the thing here, that how to get the answer. 1 minute. He said 19th century and there is written 19th century, right? He said not a few studies, he said studies. So there is a match here. He said of the nature of genius are the frequency with which early encouragement, 1 minute, most of the and teaching by parents. Now I have to work on nature of genius. So he said genius are the frequency with which early encouragement and teaching by parents and tutors had beneficial effects on the intellectual, artistic or musical development. No need, right? He said one thing here, fail. The difficulty with the evidence produced by, because it is written here difficulty, he said failed. Evidence produced by these studies means up to here I will not get the answer. Then right, I'm not get means if I am in exam, I am doing suppose this test, right? Naturally it's very hard to find answer up to this, and this is my question number 19th. One thing, so my first tip is here that first of all find 19th century. Now check from here in the first line, is there a word 19th century? No, right? Then in the go to the after the first line, second line, third line, fourth line, you will check. Then check the second para, is there any word related to it? No. Now this word, that is the time here 19th century, I have got here. Have you checked one thing? There is a hyphen between 19th and century. Here there is no hyphen. So what the person did here, he used the before it, right? It means
Here he used the hyphen and he correlated it as a single word. Here he has written, right, the writer, or we can say 3 words here. Right. Now I have to find the same thing. Then he gave me one more word here, that is this one, and he correlated this word with this one. Okay, I am agree with you. After this, the difficulty with the evidence produced by these study, he said failed to take into account. So something they have failed, and he's saying they got the problem here, right? As they are in collecting together this and this and this, whatever may be exceptions, then there is a comma here. You can check, there is one comma here, there is another comma here. Is that they are not what we would today call norm reference. It means to work in standards, right? Now this line is typical line. The language is very typical, you can check. The difficulty with the evidence produced by these studies, fascinating, whatever maybe they have written, that's typical. Now in other words, when, so 2 commas are there, what I will do, I will reach here, right? Because when 2 commas are there, I can drop this one also. Then he, right, example is written here, information is collated about early illnesses, methods of upbringing, schooling. We must, so from this line I got one line, that is my this word upbringing, etc. He said we must also take into account information from other historical sources. So he is saying that they took this one only, methods of upbringing. Then he said schooling also, early illness also, illnesses, and he said uniqueness, means they haven't taken the uniqueness of person upbringing. Then he is advising here, advice is there, right, in these lines. We must also take into account information from other historical sources about how common or exceptional these were at the time. Right. Then because one second, I know this is typical one. Check the line only. If I'll go with cutting, suppose difficulty cuts with fail, right, and produced with taken into account, this with research with your research, same thing, right? They are taken the collecting together, right, similarities and exceptions. They are not what we would call as norm face, means they have not taken a uniqueness of person upbringing. This is the meaning, because they have taken, means just like you can say that they have collected the information, but they haven't researched on single person. That's the meaning of this one. Means they collect, he has written here clearly, they collected all the information, they collated about early illnesses, right, methods of upbringing, but uniqueness is not there, right? So here the thing is that failed into take, it means they were failed, they were difficult with the evidence produced by these studies. As they collecting together, what they did, they collected all the things. It means they failed to take the person uniqueness upbringing. Now after this, then he has given, just like you can check, there is an example, this one example also again. This was high, right? Life expectancy was shorter, home tuitions were common, bullying and this were, means all the factors they failed to take into the single factors, they took the factors as a collection of all the factors. That's the thing here. But how can I judge in the test? This is the point. You can check collecting together. Then he has given the example also that information it was collected, right? So this is the point here. Now go to the second page, please. Second one again,
this is again, these two are very, we can say that, smart statements here. 19th century studies of genius lacked both objectivity and a proper scientific approach. There was no scientific approach, they lacked. But I can, if I'll read this one, I will get my half answer. How? Right. Now he said objectivity was not there. 1 minute. And proper scientific approach. These things were not there. I agree. How can he say? Because they, whatever they got from the anecdotes and similarities and exceptions, whatever may be. Right. And he said it was only with the growth of, right, who said pediatrics and psychology in the 20th century that studies could be carried out on a more objective, if still not always very scientific. This one, just a, right. Okay, there is a line here. Now check. He said lacked both. 19th century person. We read already. Because he said the cases studied were members of this class only. Right? That is, rich people were there. It means more objective when it was started. More means compare. So this is the case of 20th century. So it is compared with the 19th century. Naturally, more means, right, second degree. So compare is there. And he said not scientific, and he said only a proper. So naturally they lacked both things, because after the psychology people and pediatrics people, right? So there were this research was more objective and scientific basis. This is the meaning. Now, this is not a direct answer. I agree with you. Right. But how can I judge in the exam? Check here, 20th century is given. And why they are in 20th century line, more is written. Why they are comparing it. And still, not always very. Still means carrying out. It is also used for a relation. So, where the relation is, naturally it goes to the 19th century. That's why the answer is true here. Next one is, he said in 21st, he said he has general powers capable of excellence in any area. Means he can go in any area. If you read this one, if I will go to next, this one, they are defined are, but the peaks which stand out through the mist everybody knows. Right, it's a part of environment also, are visible to the particular observer from whatever may be. Vantage means advantage. Right. But this also you can read is a term which we apply to those whom we recognize for their outstanding. But drop it. Now go to this line. The true genius is a mind of large general powers. He said general powers. So there is a cutting here. Right. And where is written? This one is in this one. He said any area. He said to a direction. So here crosses with false. It's clear to you. According to Dr. Johnson. Right. After this, let's go to the next one. The skills of ordinary individuals are in essence the same as the skills. Both skills are same. Right. Ordinary persons also and intelligent persons also, or we can say excellent persons also. He said here, it's written here, what we appreciate, enjoy or marvel at in the works of
genius or the achievements of prodigies are the right which are similar to 1 minute. He said skills are same. I think we are doing 20 seconds. Same with similar. Cutting is there. I am not cutting it because I have a pen today in my hand. Is one. So he said skills. Where is ordinary person? On. Now because there are commas, these are non-defining clauses. You will find my next video within coming days on this also, that how defining and non-defining clauses, they help in writing as well as reading also. So what I'll do, there is a comma here, but so much superior to, I will cut this one, similar to our on. And he has written here that here on word is related to ordinary, same is related to similar, right? Prodigies is related to prodigies, and skills are related to skills. So naturally its answer is true here. Now let's go to 23rd. He said the ease with which truly great ideas are accepted and taken for granted fails to lessen their significance. Means importance, it is not decreased. He said 1 minute, first of all, but their minds are not different from our own is demonstrated by the fact that the hard-won discoveries of scientists like Kepler or Einstein become the commonplace knowledge of school children, and the once outrageous shapes and colors of an artist like Paul Klee so soon appear on the fabrics we wear. This does not minimize 1 minute. Ease with truly ideas, supremacy, great ideas, achievements, everything matches. Minimize means lessen their significance. So minimize here significance, true ideas with true ideas. Then next is often pay a high price. No, sorry, this one. Giftedness and genius deserve proper scientific research. Now it's visible also. Think of geniuses and the gifted as 1 minute. I got both uniquely different brains is only reasonable if we accept that each human brain is uniquely different. Purpose of instruction is to make us even more different from one another, and in the process of being educated we can learn from the achievements of those more gifted than ourselves. Where is scientific research? Deserve. Simple present. He said we accept it. It's already, so if we, conditional is there. So there is no matching here related to scientific research, but you can try by yourself also, and answer is not given, but you can check if you have doubt. He said often pay a high price to achieve. This one, 25th. I am on 25th. This we have got from 1 minute. This one, yes. We may envy their achievements and fame, but we should also recognize the price they may have paid, right? Restrictions on their demands upon their energies and time and tea, and how often they had to display great courage to preserve their right. So he said pay a high price to achieve greatness. So where is greatness? And this one, achievement and fame. This is their greatness, and they have paid in terms of preservance. So high price. So where is the price? This one. And this is personal lives, energy they used, time they used. This one. And 1 minute. This I got again.
he said are relative descriptive terms of no real substance, and he said deserve proper scientific research. So he has clearly written here they have no real substance, right? So there is no word here. Next we will go to be a genius is worth the high personal cost. High personal cost. So to be a genius is worth the high personal cost. So I haven't read any word here related to the high to be a. It means if you want to be very you can say achiever, or you can say that successful person, you have to give the high personal cost to be a, right? So there is no written to be a, so it is written only that we should also be. These are the suggestions here. We may and may, but we should also recognize. So there is nothing here which we can say that. You can check the complete lines here, right? We may at first give them some precision by defining them and placing them in a context, but whatever we do, we should never delude ourselves into believing that gifted children or geniuses are different from the rest of humanity, save in the degree to which they have developed the performance of their abilities. So to be I don't think so that you have to give high personal cost. There is written here. Any suggestion type of thing is there. Is worth. Is means simple present tense. So it means 100% sure. Now please let's take a. So this one I have done in front of you. You can check the sheets here properly, right? And first of all check the questions please, then I will show you the sheets, and after this I will speak in Hindi. I will try to comment in Hindi, right? So after this I am doing this one. So this is almost 32 minutes video. It may go long also, right? Because I have to speak in Hindi also. And this is the page from which the questions are taken, 19 to 26. Frankly, 19 20th, they are very nice statements, right? And this is the page here that is based on reading passage 2. And we have started from para 3, from third para, right? And we have got the 19th from here, right? And /20th from here and back also, 21 from here, and 22, yes, 23rd, 24th is 1 minute, it's not given, I haven't got. 25th I think from here, 26th is again not given, yes. And you are watching my YouTube channel, that's Parvinder Randhawa Guru, right? Please like, comment and share my YouTube channel. Subscribe YouTube channel, that's Parvinder Randhawa Guru, so that you will get the notifications of the latest uploads. Now I will go in Hindi. तो आज का मेरा ये पैसेज है जिसमें से मैंने लिया ये कैम्ब्रिज 8 बुक है, टेस्ट नंबर है 3rd रीडिंग पैसेज 2, राइट। सो ये मेरे क्वेश्चन थे जिनको मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। अब सबसे पहले मैंने क्या इसमें कैच किया, मैंने 19th सेंचुरी को कैच किया, उसके बाद नेचर को क्यों कैच किया, क्योंकि उसके आगे दा लगा हुआ है। फिर उन्होंने फेल पास लिखा हुआ है तो फेल को मैंने कैच किया, पास नहीं लिखा हुआ। फिर आप राइट फेल को कैच किया, और उसके बाद यूनिकनेस ऑफ पर्सन्स अपब्रिंगिंग तो कैच किया, यूनिकनेस को भी कैच कर सकते हो। अपब्रिंगिंग का मतलब कि कैसे वो उसका पालन पोषण हुआ है, कैसे उसको पाला गया।
20th को मैंने 19th को ये कैच किया। अब हम लोग पहले 19th को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग 20th की बात करेंगे। मेरे को पैरा जो 1 है उसमें कुछ नहीं मिला, पैरा 2 में कुछ नहीं मिला, पैरा 3rd में मैं 19th सेंचुरी में चला गया, राइट। यहाँ मुझे 19th सेंचुरी मिला, यहाँ मुझे 19th सेंचुरी में एक हाइफन लगा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने इसको कंबाइन किया है स्टडीज़ के साथ, यहाँ पे इन लोगों ने सिंगल वर्ड बनाया है, यहाँ पे दा लगा के इसको नाउन बनाया है। इसका मतलब ये आंसर ये नहीं मैं कहना चाहता। देखो 19th सेंचुरी में मुझे टिप मिल गया, मुझे पेपर में ज़्यादा पजल नहीं होना, ठीक है। वो बातें टेक्निकल हैं, क्यों मतलब अननेसेसरली मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि अगर आप टेक्निकल इंग्लिश को देखते हो तो बहुत लेंथी बन जाती है इंग्लिश लैंग्वेज ही, बहुत नाइस लैंग्वेज है। तो यहाँ पे इसने कहा द डिफ़िकल्टी, तो मुझे लगा कि हाउएवर के बाद मेरा लिंकर था, जो मैं लिंकर को पकड़ता हूँ हमेशा कोई भी वर्क हो मेरा, तो मुझे डिफ़िकल्टी वर्ड मिला। यहाँ पे आप देखिए इस पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ था फील्ड। अब मुझे जीनियस वर्ड कहाँ से मिलेगा? ही सेड, यहाँ पे उसने लिखा है प्रोड्यूस बाय दी स्टडीज़, इसने भी यहाँ स्टडीज़ लिखा है, राइट। दीज का मतलब ये किन के ऊपर हुई थी? ये देखो आप, फेमस प्रोडिजीज के ऊपर हुई थी, जीनियस के ऊपर हुई थी। इसका मतलब मेरी टर्म जो चलती आ रही है। तो उसने डिफ़िकल्टी का, फेल का, कुछ मुझे लगा कि मेरी मैचिंग ठीक है। वहाँ कलेक्टिंग करते थे, सबको इकट्ठा करके वो लोग तब अपनी स्टडीज़ को करते थे। आज की डेट की तरह फिक्स स्टैंडर्ड्स नहीं थे उनके, ठीक है, नॉर्म रिफरेंस्ड, ये फिक्स स्टैंडर्ड नहीं थे व्हाट वी टुडे। तो अब इस पर्सन ने क्या किया आगे जाके, फिर हमारे को एग्जाम्पल दिया भी, देखो वो सब की सब इकट्ठा करते थे, ठीक है, और ज़्यादा वो किसके ऊपर ये इसने क्या मांगा है हमसे, कहता है कि वो ना अकेला नहीं करते थे, किसी के ऊपर यूनिकनेस नहीं लेते थे पर्सन अपब्रिंगिंग में, मतलब कि वो फेल टू टेक, मतलब वो इकट्ठा ही करते थे। इसका मतलब 19 का कहने का ये मतलब, और यही बात यहाँ लिखी हुई है कि वो कोलेटेड थे अर्ली इलनेस, मतलब कि सब चीज़ों के इकट्ठा करते थे लोग, मतलब कि जैसे चिल्ड्रन का जो भी है इकट्ठा व्यू लेते थे वो लोग, राइट। तो ये मेरा इस कारण क्या हो जाता है कि मेरी बात पॉइंट यहाँ फेल टू गारंटीड हो गया, वहाँ उसने कहा कि वो इकट्ठा नहीं करते, तो ये मेरा टर्म मैच हो जाता है, जिसका मुझे एक तरह से आंसर मतलब कि क्लियर है। ड्यू टू दिस मैच, यहाँ से मुझे मैच हो गया कि कलेक्टिंग टुगेदर, तो मैंने आंसर अपना ट्रू दे दिया, राइट, क्योंकि पूरी लाइन मेरी मैच हो रही। आप ध्यान से देखो, डिफ़िकल्टी को मैंने फेल के साथ कटिंग कर दी, और जो उसने कहा ना काउंट द यूनिकनेस नहीं थी, वहाँ मुझे क्या वर्ड मिल गया था, जो वर्ड मुझे यहाँ मिला था वो मेरा कोलेटेड वर्ड मिल गया था, यहाँ भी मेरे को मिला था वर्ड कलेक्टेड, राइट। तो ये मेरे वर्ड्स मिल गए थे। अब मैं, चलो ये तो मेरा 19 तो ईजी सॉल्व हो गया, राइट, क्योंकि मैं भी दोबारा कर रहा हूँ सॉल्व। अब मैं आता हूँ 20th पे। 20th पे उसने नॉर्म रेफरेंस लिखा हुआ है वर्ड। इसने कहा कि ना तो वो ऑब्जेक्टिव थे, बहुत ऑब्जेक्टिविटी थी, ना उनके अंदर साइंटिफिक अप्रोच थी, ठीक है, ना तो वो साइंस बेस्ड थे, फिर इसने हाइफन लगा दिया, और ना उनके अंदर ऑब्जेक्टिविटी का कहने का मतलब ये कि वो भी ज़्यादा क्लियर नहीं करते थे। यहाँ पे बहुत सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा होगा, ठीक है, भी ग्रुप को उठाया और अपने वो ले लिया। अब ये तो मुझे यहाँ से क्लियर हो गया कि ये बात वो पर्सन कह रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं थे, क्योंकि उसने कहा ना कि जो हम लोग आज करते हैं नॉर्म रेफरेंस, इसका मीनिंग देखोगे डिक्शनरी के अंदर तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ उसने एग्जांपल दे दिया कि जो भी रिसर्च होती थी ना वो उस टाइम, अब चेक करो इस लास्ट लाइन पे कि कॉमन एट द बेस्ट इंडिपेंडेंट, तो इसने कहा कि स्कूल्स में होती थी भी जो भी है, और मेंबर सिर्फ किसके होते थे, प्रिविलेज क्लासेस के होते थे। इसका मतलब जो एलीट पीपल थे, जो हाई फाई पीपल थे, उनकी सिर्फ रिसर्च होती थी। तो इसने वही चीज़ यहाँ से हमसे डिमांड की कि उनके अंदर ऑब्जेक्टिविटी लैक थी और साइंटिफिक नहीं थी। अब ये चलो मैंने 20th सेंचुरी में आके मेरी लाइन स्टार्ट होगी, और यहाँ मेरी जो पार्ट लिखा हुआ है 19th सेंचुरी का लिखा हुआ है, राइट। अब इस पर्सन ने यहाँ पे हमारे साथ क्या किया, वर्कआउट कैसे करेंगे हम लोग एग्जाम के अंदर या टेस्ट के अंदर, हम कह सकते हैं कि इसने कहा कि स्टडी शुड बी कैरिड आउट 1 मिनट, इट वाज कहता है, उसके बाद पीडियाट्रिक्स हो गए और साइकोलॉजी हो गई, राइट। जो मतलब कि जो भी स्ट्रीम्स आ गई 20th सेंचुरी में, उन्होंने मोर ऑब्जेक्टिव लाई। मोर मेरा कंपेयर होता है, कंपेयर किसके साथ करना है, मुझे किसी न किसी चीज़ के साथ करना है। तो ये कब आए, ये 20th सेंचुरी में आए, इसका मतलब 19th सेंचुरी में वो मोर मतलब कि
इतना नहीं था ऑब्जेक्टिव। सेकंड, साइंटिफिक बेसिस स्टिल नॉट ऑलवेज वेरी, मतलब कि इफ स्टिल मतलब कि कुछ साइंटिफिक बेसिस नहीं था, लेकिन उस टाइम तो प्रॉपर बिल्कुल था ही नहीं। तो यहाँ से इसने क्लियर किया, आप चेक करो एक बार लाइन कि 20th सेंचुरी में मोर ऑब्जेक्टिव हो गए थे और साइंटिफिक बेसिस हो गए थे, राइट। तो ये इसलिए 19th, देखो मोर के कारण मुझे पता लग गया कि कंपेयर कर रहा है पर्सन, राइट। तो यहाँ पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि 20th सेंचुरी को उसने मोर के साथ क्यों मतलब करा, कि क्यों मोर था, इसका मतलब पहले ऑब्जेक्टिव नहीं था, बाद में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो गया। तो ये मन, आगे मैं चलता हूँ 21 के ऊपर। उसने कहा कि इसके बाद जनरल पावर्स थी, कैपेबल ऑफ एक्सीलेंस इन एनी एरिया, कि किसी भी एरिया में जो एक्सील मतलब किसी भी एरिया में वो लोग इंटेलिजेंट थे, ठीक है। यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो ये डिफाइन हो गया, राइट। आगे जाके टर्म होगी मेरी, वो भी डेफिनेशन में आ गई। तो इसने कहा कि लार्ज जनरल पावर्स हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ये देखो सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, भी एक या दो पेज या तीन में, और ये कह रहा है एन एरिया, एन एरिया मतलब चारों तरफ। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, आपके क्रॉस हो गए। इसी का मेरा आंसर किस में चला गया, ये फॉल्स में चला गया, ये रीजन अब देख सकते हो। ये पूरा 21 मैंने मैच किया है, जीनियस के साथ जीनियस मैच हो गया, जनरल पावर्स के साथ देखो जनरल पावर्स मैच हो गया, लेट मी पुट द पेन हियर, ठीक है। ये दोनों मैच हो गए, सम पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया, इन एनी एरिया हो गया, ये चीज़ आपकी सारी। फिर इसने 22 में क्या कहा कि जो उनकी स्किल्स हैं, स्किल्स का मतलब जो भी उनके अंदर क्षमता है, राइट, लैंग्वेज आप, वो सेम है जो इंटेलिजेंट पीपल में, मतलब ऑर्डिनरी ह्यूमन की इंटेलिजेंट पीपल के बराबर है, यही मतलब है ना, सेम है। हम लोग आगे गए जब, अब हम लोग चलते जाएंगे पेपर में कैसे करना आपने, जहाँ जैसे प्रैक्टिस करते हो। अब यहाँ तो चलो ये वर्ड मुझे मिल गया क्लियर कि प्रोडिजीज लिखा हुआ है, स्किल्स के साथ मेरा स्किल्स मैच हो गया। एक सेकंड के लिए ध्यान से देखना प्लीज। इसने कहा सिमिलर टू अवर ओन। अब मुझे ये बातें नोट रखनी है कि जहाँ पे ओन है मेरी बात हो रही है, मैं कौन हूं, मैं ऑर्डिनरी पर्सन। तो ये मेरा इसके ऑन के साथ कट गया, राइट, दोनों मेरे डिटी। और ये इंटेलिजेंट का जो वर्ड है मेरा इंटेलिजेंट प्रोडिजीज के साथ कट गया, जिनके पास गिफ्ट है, राइट। सेम मेरा सिमिलर के साथ कट गया, तो नेचुरली मेरा आंसर किस में चला गया, ये भी ट्रू में चला गया। यहाँ मैंने बात की थी नॉन डिफाइनिंग क्लॉसेस। बेसिकली जब दो कोमास आते हैं तो हम सुपर मतलब कि बाईपास आगे चले जाते हैं, उसको उतनी लाइन को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। बेसिकली ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज होते हैं, एक डिफाइनिंग क्लॉजेज होते हैं। हाँ, आने वाले टाइम पे मैं एक तो एमसीक्यूज वीडियो आएगी, अपलोड होगी थोड़े दिनों बाद। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज होगी, जिसका मतलब कोमा एक सेम सेंटेंसेस का चेंज ही कर देता है, मीनिंग चेंज कर देता है, राइट। अगर आप डेप्थ में देखो, यहाँ मेरा मेन पर्पस टू क्लियर द आइल्स है। नेचुरली ये आइल्स है तो ग्रामर के ऊपर ही बैठी हुई है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है ये, क्योंकि मुझे लैंग्वेज को पास करना है, लैंग्वेज टेस्ट है, राइट। अब स्केल जो है इसका 9 का स्केल है, राइट, गॉट माय पॉइंट कि 9 के स्केल पे मुझे बैंड चाहिए। अब किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है हर किसी की, ज़्यादा मैं ना इंटरनली जाऊँ, मुझे मेन पॉइंट्स उठाकर अपना वर्कआउट करता जाऊँ। सेकेंड थिंग, लेकिन राइटिंग में मुझे नीड पड़ती है कि मुझे कॉमा कहाँ एडजस्ट करना है। रीडिंग में भी थोड़ी देखो नॉलेज होनी चाहिए, कॉमास की, लिंकर्स की, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे वर्कआउट करता हूँ मैं। इसने बहुत बड़ा क्लियर किया है यहाँ पे, कहता है कि जिस हिसाब से ये मेरे ख्याल से मैं 23rd पे आ गया हूँ, आइडियाज एक्सेप्ट होते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड, इसका मीनिंग आपको पता ही है, राइट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फेल्स टू लेसन देयर, भी उनका भी जिस तरह उनको लिया गया, मतलब कि जहाँ वो कह सकते हैं हम लोग कि वर्कआउट किया गया, उसमें उनका जो सिग्निफिकेंस था वो कम हो गया, राइट। यही मीनिंग बना इसका कि जो उन्होंने लिया कि जिस तरह उनके आइडियाज आए,
ग्रेट आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया जितनी ईजी तरीके से, उनके कारण उनकी जो वैल्यू थी कम हो गई। अब आपने जब यहाँ तक वर्कआउट कर लिया, हाँ एक ट्रू फॉल्स जो होते हैं ना आपके, वो उसमें होते हैं क्या ऑर्डर में होते हैं, प्लीज़ ये याद रखना। तो ये वर्कआउट करना है हमने यहाँ पे कि क्या ये मैच हुआ। अब ये डायरेक्ट मैच ये भी नहीं है, देखो आपने जितना भी वर्कआउट किया यहाँ पे, मतलब कि डायरेक्ट मैच यही सिर्फ मुझे एक मिला है, डेट इज़ 21। बाकी मुझे थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ी कि मैच कैसे करने हैं। अब मैंने यहाँ पे लाइनें पढ़ी, इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए, केपलर का दिया जिसने मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा पता है कि राइट, और एक इसने एग्जाम्पल दिया आइंस्टीन का, एवरीबडी नोज हु दिस पर्सन्स। देन एक पॉल कैली का दिया, पॉल का भी एग्जाम्पल दिया है। अब मैंने क्या किया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने कहा दिस डज नॉट मिनिमाइज द सुपरमेसी। इसने कहा मिनिमाइज को मैंने लेसन के कर दिया, सिग्निफिकेंस को मैंने सुपरमेसी के साथ कर दिया, ट्रूली आइडियाज एक्सेप्ट हो गया, फेल्स टू। तो नेचुरली मेरी लाइन ऑफ देयर अचीवमेंट्स, ट्रूली जो आइडियाज़ हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन लोगों के इन्होंने एग्जाम्पल दिया, मिनिमाइज द सुपरमेसी ऑफ देयर अचीवमेंट्स, जो मेरा मैच हो गया। इसका मतलब उनकी अचीवमेंट्स को मिनिमाइज नहीं हुआ, जो उनकी सुपरमेसी थी लेसन नहीं किया। तो ये मेरा 23rd भी आपका ट्रू बन जाता है। कैन आई रिपीट दिस वन, चेक प्लीज। वो कहता है जिसने आसान तरीके से, अब आसान तरीके कैसे हुए, ये देखिए आप कि उनके माइंड हमारे माइंड से अलग नहीं है। इससे ये डेमोन्स्ट्रेट ऐसे हुआ कि जो इन लोगों ने अपनी डिस्कवरीज करी आज की डेट में स्कूल चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी अचीवमेंट्स को नजरअंदाज कर सकते हैं, जो भी हिंदी का वर्ड है ये लेसन देयर सिग्निफिकेंस, ये मीनिंग नहीं है इसका। इसका मतलब बिल्कुल 100% आप मैच हो गया। यहाँ मतलब कि ये आ गया ना कि ईज़ कैसे पता लगा कि आज की डेट में हर बुक के अंदर इनके आइडियाज़ लिखे हुए हैं, इनके मेथड्स। यहाँ तक उसने एग्जांपल भी दे दिया, जो आप शेप्स और कलर्स पाते हो, ठीक है, वो फैब्रिक जो आप कलर पाते हो वो भी आप देखिए यहाँ पे इसने क्लियर किया हुआ भी, वो भी कॉमन हो चुके हैं। तो ये मेरा मैच हो जाता है। अब आगे जाता हूँ, ये कहता है ये तो चलो हो गया, ये मुझे मिला नहीं डियर, मैंने सारे सर्च की, यहाँ लिखा जरूर है बट इसने कहा कि डिजर्व प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च, मुझे मिला नहीं फ्रैंक टू यू, तो इसलिए मैंने इसका आंसर नॉट गिवन दिया है। बाकी आप कैम्ब्रिज 8 मैंने बताई आपको, टेस्ट 3 में से सेकंड पैसेज लिया गया। इसके बाद इसने कहा 25th में कि ऑफन पे अ हाई प्राइस देते हैं। इसने कहा यहाँ पे कि हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, दे पेड इन टर्म्स ऑफ राइट। इसका मतलब होता है डिज़ायर, कोई काम करना आगे चलाने के लिए, डेडिकेशन, पर्सनल लाइफ उनकी, एनर्जीज उनकी, टाइम दिया जो हमने पे किया। तो इसने कहा ऑफन पे अ हाई प्राइस, की ज़्यादातर वो हाई प्राइस देते हैं। अचीवमेंट आपकी इसके साथ ग्रेटनेस के साथ मैच होगी, नेचुरली आंसर ट्रू है। और ये मुझे कहीं मिला नहीं कि जीनियस बनने के लिए आपको हाई पर्सनल कॉस्ट देनी पड़ेगी, ये कहीं नहीं मिला। तो इस तरह मैंने ये सॉल्व किया 19 to 26, राइट डियर। अब आप एक बार ये देखिए, फिर उसके बाद आप प्लीज़ पैराग्राफ को देखिए ताकि आपको समझ आए। और आप लोग परविंदर रंधावा गुरु यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अब जो भी वीडियो आ रही है आपको पता है इंग्लिश प्लस हिंदी में आ रही है, ताकि आपको लेटेस्ट जो अपलोड्स हो रही हैं वीडियोस की वो नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और जो भी हम टिप्स डिस्कस कर रहे हैं आप एप्लीकेबल कीजिए उनको, नेचुरली आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि सारी आइल्स है तो टिप बेस्ड, कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भी होती है, सिर्फ टिप्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो ये चीज़ है। यहाँ से मैंने क्वेश्चंस जैसे सॉल्व किए, ऑलमोस्ट ये बुक सभी के पास है, तो आप अपनी बुक में से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। And you are watching my YouTube channel, that's Parvinder Randhawa Guru, and this is my contact number, that's +919416085201. And please like, comment and share my YouTube channel, please, and above all subscribe Parvinder Randhawa Guru
at YouTube, naturally you will get the notifications. Thanks for watching this video.